अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Welcome back to Almighty Blues FC, your fan channel for all to see, because it's a crazy weekend coming up, भाई. इतने सारे fixtures है. This is going to be a bombastic, dramatic, crazy madness loaded and how. Game week 5 आपको सब ड्रामा मिलेगा. तो भाई सब जो स्क्रिप्ट है यहाँ पर हम खोलने वाले, with just not me, the Chelsea fan, and of course कहीं ना कहीं the neutral for today as well. लेकिन also we have a Manchester United OG in the house, an Arsenal OG in the house, and of course you all. तो सब लोग let's smash that like button. Early vibes क्योंकि भाई बड़ा weekend है, तो lots to discuss है for sure. कौन कौन in the house, let me know. विजय बोल रहे भाई, yes बिल्कुल बिल्कुल. We have to discuss. आपका comment स्टार कर रहा हूँ विजय can't wait like others. Shubham in the house as well, always here no matter what. Ritin obviously यहाँ पर है as well, shout out to Ritin को भी. Rajiv in the house, Sushant, big ups to you मेरे भाई. Randomness आ गया है. I hope each and everyone joins in very soon, but not randomly, because there's a lot of agenda and more to discuss. क्या हाल है भाइयों सब लोग? वेलकम बैक. नेथन इन द हाउस. नेथन, फर्स्ट ऑफ ऑल, obviously Manchester Derby के बाद में it's been a difficult kind of a time for a Manchester United fan, I believe so. लेकिन new week, of course, the old rivalry back, original top 4 वाला Manchester United Chelsea hosting Chelsea. You are so used to it and kind of not too bad, right? I mean, first of all, let's get one correction right out of it. There's no top 4; it's a top 8 now, Ankit, because we have become an inclusive league. First of all, that's the word you'd like to use. I mean, honestly, with regards to the Manchester Derby, I mean, I didn't really think we were going to win anyway. So I thought I predicted a 1-1 draw. So because the likeliness of winning just didn't seem there. So I'm not really that down about it. The thing is, when you know what's going to happen, you're almost never as disappointed. बिल्कुल. But we have first time Kanishk in the house as well. यहाँ पर obviously KV react for people who do not know. But Kanishk, कहीं ना कहीं title decide तो है, मतलब you can't stay on the fence anymore, can you? Man City. We have been on the fence for 2 years now. Really trying to push ourselves over it and get to the promised land. But I think I was having this discussion yesterday about Arteta playing boring football but getting the results, and I am all for it. I am completely in support. I'm supporting that approach. I do not care if Arsenal's football is entertaining to the neutral eye, if it's not entertaining to any of us. For me, if we keep getting the 3 points, it is entertaining. As long as we get the 3 points, we need to get that first trophy. We need to get either the Premier League or the Champions League. We have to get that monkey off our back, and once we do, I feel that with this squad, if it goes on for the next 3 to 4 years, and if we do win the Premier League this season, if we do, big if, obviously one of the most toughest leagues to win in world football, but if we do get there, then yes. And obviously to win the Premier League, it's not just the Manchester Cities, Chelsea's, United, Spurs, and everyone else. It's each and every single game that you play. You have to get a result. You have to get a positive result, and that's what I feel we have to do this time as well. बिल्कुल. तो चलो भाई, let's go into it. कौन और जुड़ गए भाई सब लोग? I hope everyone has smashed that like button and checked out the panel's channels tagged below as always. First things first, obviously there are 3 massive games जो हम discuss करेंगे for sure, among other predictions as always that we do. United Chelsea is the one big one, that is tomorrow 10 PM. Don't you forget about this, Indian Standard Time, and this is going to be interesting, as we said, yet again, or the Merseyside Derby. There are other games as well for sure. कहीं ना कहीं I believe so. Brighton Spurs could be a banana skin and half for Spurs, considering European fixture था. Maybe Fulham Brentford, technically that's a derby. So there are some good fixtures. Sunderland Aston Villa, the latter बहुत pressure पे है. Newcastle, after that first half performance of Barcelona, might be tired traveling to Bournemouth. Wow, that's a crazy week, I swear. लेकिन we have to start with the big one, Manchester United hosting Chelsea. Nathan, what is it about Manchester United? I know Old Trafford is a different scene.
now compared to what it used to be in terms of just एक होता ना एक scare for the opposition. But why do you think Chelsea hasn't managed to get a result there? मतलब it's been 12 साल हो गए यार, 12 साल. That one Mata free kick was a deflected goal, right? That was the last that I remember, right? लेकिन what do you all do to Chelsea at Old Trafford that आपको लगा कि वो years why we haven't got a result? I mean, it could be a mixture of it doesn't matter how good you are. Chelsea, what did Gary Neville call you? Gary Neville himself Something is bottle, basically a clickbait Yeah, क्या बोलते हैं? surprisingly does it well these days. Yeah, But yeah. actually, it could be a combination of everything. I think this question kind of reminds me of Liverpool, Manchester United, where the derby was important to the local fans, but not as big as it could have been because one club was always significantly worse than the other. Like Prime United was struggling. I mean, struggling Liverpool, and we'd still like win maybe 2-1, 1-0. Even though they were struggling, it would be a tough match. So I think it's one of those things. I think it's just a tough match. It doesn't matter. Form goes out of the window and it just becomes a tough match. Probably. तो लेट्स ब्रेक इट डाउन. यहाँ पर हम ब्रेक डाउन करेंगे कि बेसिकली ऑब्वियसली यहाँ पर बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं. इट स्टार्ट्स विद द एक्स एक्स इज व्हाट आई वुड से. कहीं ना कहीं दैट इज द बिल्ड अप टू द गेम दैट इज हैपेंड. ऑब्वियसली यहाँ पर मेसन माउंट ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर ये है कि मेसन माउंट इज पॉसिबली फिट, राइट नेथन? तो अगर इफ यू आर रूबन एमोरिम, विदाउट गिविंग द अदर लाइनअप्स अवे, other part of the lineup away, आपको लगता है कि मेसन माउंट against Chelsea is a no-brainer to start, और आपको लगता है Ruben Amorim will start but you don't want to start? He's probably going to start him, but I wouldn't start him. तो भाई यू हर्ड दैट चैट. आप लोग भी बोलो मेसन माउंट अगेंस्ट अस. ऑब्वियसली यहाँ पर एंजो फर्नांडिस का उसका जो बैटल हुआ था इज समथिंग दैट वी कांट फॉरगेट. लेकिन एंजो फर्नांडिस भी रिसेंटली क्वेश्चन मार्क है इन टर्म्स ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस लास्ट 2-3 वीक्स में ही. आई नो कि नैरेटिव अलग बोलता है, बट लास्ट 2-3 वीक्स में आफ्टर द सीजन स्टार्टेड इज नॉट बी द बेस्ट. बट यार न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं बिकॉज कनिष्क, मतलब आपने भी एक दौर गुजारा है. आई रिमेंबर आर्टेटा के फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स दैट he had. I remember Lampard का जो first tenure था, during that time there was a debate going on between Chelsea and Arsenal fans who will get in the sack first, etc. and Lampard eventually got it. But Arteta has changed it, and how we all know, कहीं ना कहीं वो structure is what Arteta was so इतना जिद्दी था वो करता है. Ruben Amorim almost comes from that school of thought. लेकिन वो अलग बात है कि इसके पास ज्यादा opportunities नहीं in terms of games. The rigidity, right? We all know कि recent weeks में जो हुआ है Grimsby Town के against, he played Mason Mount at left wing back and things like that. आपको लगता है Ruben Amorim needs to kind of be flexible and take the blame, or do you think it's a matter of players not standing up? How do you see this? I was actually last week I was going on people's streams and वहाँ पे discussion चल रहा था about whether we should give Ruben Amorim the time, or whether the there's a certain population जो कह रही है कि यार sack करो ये बदल नहीं रहा है and all that stuff. So this is my point of view. Mikel Arteta, and some people disagreed with this, Mikel Arteta has gotten a lot of time. कहते हैं 7 साल हो गए ट्रॉफी नहीं जीता है, ठीक है? That is point number 1, which is a fact. It is undeniable. However, Mikel Arteta, if we talk about within those 7 years, inside 3 years, what he did first was he got rid of the heavy egos of some of the players. He got rid of some of those players who had very large egos. It almost felt like the players had they were under the thumb of the captain. He did not like Pepe. He did not like Aubameyang. He did not like their leadership and their influence in the dressing room. So the first thing that he did was he slowly got these players out. The next thing that he did was he started to form the team within his own मतलब अपने हिसाब से बनाने लग गया टीम को, क्योंकि he was obviously from the Pep school of football, and everything he knows about management is from Pep, because this is basically his first job, and इससे पहले एक तरीके का उसने internship करा है at Manchester City. So वो जो philosophy है, that is like he's tried to clone it at Arsenal.
inside 4 years, we started competing. We became a better team. We made more efficient signings. We got in more efficient players. And I feel जब rebuild वाला phase होता है ना, you cannot expect immediate success rebuild वाले phase में. You need to give the manager some time ताकि वो अपना system set कर सके. Now it is very unfortunate. अगर Arsenal last 2 seasons में Premier League जीत गई होती, even once, just एक बार अगर हम जीत गए होते, we lost by close margins and that happens in football. But एक बार हम जीत गए होते, we won't really be having these many discussions about Miguel Arteta. Maybe we would have a different kind of discussion. I feel Amorim needs to be given time. Amorim बोल के थक गया है, and he speaks very passionately about it. I mean, this is a man who with Sporting was doing such a brilliant job, and he did not have half as good of the squad that he did. Now at Manchester United, I feel that because the competitiveness of the Premier League, of the English footballing system overall is so high. Like even when we talk about Grimsby Town put in a Herculean effort. They were making the runs, they were doing that 1-2s and passing the ball, trying to play it behind the defense, and they were trying to play to their strengths as much as possible. So मैंने पूरा game देखा था वो. So it was a very unfortunate result for Manchester United. I think they were taken aback. Like एकदम से shock नहीं लगता है एकदम से, and then you have to take some time to recover. They eventually got back into the game. I feel if it had gone into extra time, they would have gone across the line. But then, of course, the narrative is that you cannot have these kind of results against Grimsby, and that is the reason why there is so much pressure on Amorim at the start of the season. And the same thing would have happened with Arteta had he also slipped up in some of the games that we definitely, if we had lost at Old Trafford, which we performance अगर हम देखें तो Old Trafford पे United were the better side. If Dorgu का shot अंदर चला गया होता, if Mbumo or Cunha had taken their chances more efficiently, we would have been behind. We would not have won that game. So the pressure, the exact same pressure that we're seeing on Amorim right now, would have the Arteta would have been at the receiving end of it. So it's just it's pretty close call. But I feel that Amorim needs to be given time. Still, I mean, I know a lot of players are not, a lot of fans are not behind him, and some fans are behind him. But we're just starting to see what अभी December January में क्या हाल होएगा. I have no idea. It all depends on what position United are in. नितिन, यहाँ पर अगर लेट्स गो प्लेयर बाय प्लेयर थोड़ा सा, मतलब विल ब्रेक अप मोर ऑफ Amorim. आई वुड लव टू गेट योर ओपिनियन मोर, बट यहाँ पर Amorim ने बोला है दैट वी डोंट स्पीक अबाउट अदर्स प्लेयर्स एटसेट्रा, व्हिच इज फेयर टेक्निकली स्पीकिंग, बट आई थिंक ही कुड हैव प्रॉब्ली सेड, जहाँ पर आई नो ही इज नॉट अ लोन, ही इज नाउ अ चेल्सी प्लेयर. लेकिन फॉर एग्जांपल मरेस्का को पूछा गया था अबाउट निकोलस जैक्सन, ऑल्दो निकोलस जैक्सन इज टेक्निकली ऑन लोन टू बायर्न म्यूनिख, but we all know that Nicholas Jackson quite openly wants out of Chelsea, and it's mutual actually. तो मरेस्का ने बहुत respectfully बोला है, despite Nicholas Jackson almost doing a lakaka on us, so he said very respectfully yesterday that he's a fantastic guy. I messaged him this, that, and all that, and I wish him all the best, etc. तो I know कि Is there Amorim ने any same proof चीज of बोला such था. messages? Maresca has admitted that by himself. And are you No, but is there trying any to say proof? Maresca lied? Would it be the first time you've heard a manager lie? No, not really, but No, you the sounded thing is, very shocked when I said that. okay, That's I was the wondering. second part of this is Nicholas Jackson was asked the same question and he agreed to that as well. So No, it I'm cannot just be saying. lie. I not But yeah, but I मेरा mean, you point can वो नहीं just था, मेरा question ये था, PR Nathan, before I media. kind of let you speak, is the fact that Garnacho, now Garnacho के बारे में यही चीज बोल रहा था when the transfer window was not done and when Garnacho's transfer did not happen. Today when he was asked, language अलग बोल रहा है, although I get it technically speaking that he's not a Manchester United player, but don't you think you would like, what I'm referring to is there is a definite concern in terms of man management. Don't you think that's a concern as a Manchester United fan, because he kind of rubs off the wrong ways what it's seeming like as a neutral for me. I mean, I suppose it depends on who you ask. For me, people are saying people have been blaming players for a lot of things over the last 4 Correct. 5 years. But it's you at the end who sign up to take the task of managing this club. If you can't do it, then you just shouldn't do it, because at the end of the day, like you know what? Let's just forget it. We're talking about man management, right? Man management. He doesn't even pick the right players in the right position. Why are we talking about man management?
Forget Who? behind the Amarim. scenes. Amarim. We're He talking doesn't. about Amarim. Yes, He doesn't pick the right people And on we'll the come pitch. to So why Maresca are we? because वहाँ भी issues है. In my opinion, both have There's no issues. point talking about outside of the pitch because on the pitch itself he does not pick the right people. So it's very easy to go behind the scenes. We don't know what they're doing, right? But we definitely know what he's doing on the pitch. He doesn't do it there either. So definitely मतलब lacking, for I lack of a hear you better are both word. cool यार. मैं सोच रहा हूँ सुशांत बोल रहे गर्नाचो इज नॉट सच अ प्लेयर, ही इज एन एरोगेंट प्रिक. देखो एग्जैक्टली सुशांत, अब आपने यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड राइट. अब वही हम ऑफ स्टेज वही बात कर रहे थे कि गर्नाचो का भाई एंड अदर थिंग्स हैव डन लोड्स ऑफ शिट. तो कहीं ना कहीं एमोरिम has even bared those question is actually credit to Amarim if you think that way. तो from other angle आप देखते हो ना, वही जैसे Nathan said right, it's a point of view that you're looking from, you know. That's what matters. But again, at the end of the day, he is someone who literally भाई he was a teenager basically जब Amarim वहां पर था आया था right. Think about that. So with that perspective, I think probably it could be better. वही चीज मैं एंजो मरेस्का पर भी आऊंगा because Enzo Maresca has also asked a good few things. Obviously आज भाई कनिष्क हमारे मैनेजर ने बड़ा चीज बोला है. बॉम्ब स्क्वाड हमारा भी है राइट, हमारा भी था राइट. And Disasi and Sterling quite famously is are the two people that I am referring towards. तो आज पूछा गया वापस से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंजो मरेस्का को और वहां पर he had a proper answer and I was impressed for once because yes, while I don't agree with the way that Sterling and Disasi have been treated by the club, लेकिन why is it that all of a sudden भाई media are suddenly feeling sorry for especially Raheem Sterling, who is at this point in time earning the highest in Chelsea Football Club for a good while, 300k per week, right? और he chose to kind of stay in England and he wants to be in London. ऐसा नहीं था उसके पास options नहीं थे. He had options लेकिन he wanted to stay in England and London. Because the London club did not want him, he ended up being at Chelsea. And because Enzo Maresca is so adamant कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए. So why should I, right? But I've been there as a player. It's difficult, I agree. But हमारे manager ने बोला है भाई my grandpa was my dad is 75 and he was a fisherman for many years. That is hard. You don't call footballers being kind of getting the sorry. सही तो कह रहा है. सही तो कह रहा है. Like what are we supposed to feel bad for someone who's making 300,000 pounds? I don't understand. It is a business. ठीक है, फुटबॉल इन मॉडर्न टाइम्स अब एक बिजनेस बन चुका है. उसे एक्सेप्ट कर लो. लोगों को ना लोग हर चीज़ को बहुत एंड स्पेशली जब मीडिया वाले बात करते हैं तो उनको एक इमोशनल एंगल डालना होता है हर एक चीज़ में. हर एक स्टोरी एक इमोशनल एंगल की तरफ से बनती है. तो आई फील लोगों को अपने दिमाग में ये डाल देना चाहिए कि यार फुटबॉल एक बिजनेस है. ठीक है, एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं ये जैसे अपन EAFC में ट्रांसफर मार्केट में होता है ऐसा नहीं होता. छोटी से छोटी डिटेल रैप अप की जाती है. एंड देयर हैव बीन बिजनेस डील्स दैट हैव गॉन राइट एंड देयर हैव बीन बिजनेस डील्स दैट हैव गॉन रॉन्ग. एक वो आई डोंट नो, एक डॉक्यूमेंट्री आई थी सनडरलैंड टिल आई डाई करके नेटफ्लिक्स पे. उसमें उन लोगों ने एक मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर था जेक लिवरमोर, क्या नाम था उसका, ऐसा कुछ नाम था. सनडरलैंड, हाँ, तो सनडरलैंड ने उसको लोन पे लिया था. दे टुक हिम ऑन लोन एंड वो उसने खेलने से ही मना कर दिया था. कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट में उसकी गड़बड़ थी एंड बिकॉज ऑफ हिज वेजेस सनडरलैंड डूब गई. सनडरलैंड को बहुत फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स आए एंड अभी आई थिंक इतने सालों बाद सनडरलैंड वापस आई है. तो देखो या तो आप लाइक मैं एज अ क्लब की बात करूं तो क्लब चाहता है कि भाई क्लब का फायदा हो, राइट. प्लेयर आया है, प्लेयर खेलेगा, प्लेयर परफॉर्म करेगा, अच्छा रिलेशनशिप बनेगा. अगर प्लेयर का टाइम ही निकल गया है, आई मीन रहीम स्टर्लिंग हैज ट्राइड, आर्सेनल आया, नहीं चला. ठीक है, उससे पहले उसका कहीं और भी था, आर्सेनल से पहले कहीं था वो, नहीं, ही वाज एट चेल्सी ओनली. चेल्सी ओनली, मतलब वो तो कुछ किया नहीं इसलिए हमें याद नहीं आ रहा. हाँ, वो तो बस हो गया ना. लाइक उसको भी समझ जाना चाहिए. जैसे ऐसे कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लटके पड़े हैं उसका. ये लोग ल्यूक शॉ का कॉन्ट्रैक्ट, ल्यूक शॉ ही था, हाँ, ल्यूक शॉ का कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट कर देते कुछ टाइम पहले तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को 26 मिलियन पाउंड का लॉस हो जाता कुछ टाइम पहले. तो दिस इज बिजनेस. अब आई मीन इफ यू वांट टू फील सॉरी फॉर द पर्सन दैट ही इज अर्निंग 300,000 पाउंड्स पर वीक, तो उसके लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है.
चेल्सी में but इतने ज़्यादा बेटर प्लेयर्स हैं, नहीं, obviously this कैसे started स्टर्लिंग from the कर fact that FA actually मतलब again ये update भी आ गया है that FA has actually cleared Chelsea of that. और वो क्या हुआ था, शुरू हुआ था, Sterling had put up a story training basically under lights. तो it seemed, it gave the kind of message that maybe उसको अलग टाइमिंग भी बोला गया है that he's supposed to train at etc. मतलब वो बोलते हैं ना एकदम ही मतलब डिस्कार्ड कर दिया है. It's not that. Chelsea has come out and actually Maresca has also confirmed that. I believe that there are actually a separate coach each. I repeat, each for Sterling and Disasi been given. So these are अच्छा there because both of them did not want to go. Disasi को लोन पे जाना नहीं था. Disasi के लिए भी there was offer. He didn't want to go on loan. He wanted to go back to Monaco. ठीक है, लेकिन they wanted only on loan. Obviously खाली loan. We are tired of giving people on loan. वो एक loan spot लेता तो we didn't want to give either, right? तो वो एक deadlock ठीक situation है हो गया. तो Disasi and Sterling both had options abroad, but वो abroad जाना नहीं चाह रहे थे और लोन पर नहीं जाना चाहते थे. तो that is where what we had done is चलो ठीक है, you're not part of our squad because our squad has a certain plan. आप लाइन में नहीं आते हो, although that is debatable. लेकिन साथ में we will give you trainers. आपको basically facilities है, आपके पास आपको wages मिल रहे हैं, आपके पास trainers है. You get ready for the January window so that you can get a move and be fit till January in the worst case yeah, scenario, right? but that doesn't make sense, right? Because they don't want to go. Like then In the January, fans so will they get. will go. It's just that they didn't get the move that they're looking for, na, in But summer. what if they don't get? But that's what I'm saying. No, what if that happens again? Like the clubs they are looking for, they don't want. Like it happened with us for Garnacho. It happened with us for Anthony. Yeah. You Then can वही cycle train होगा them. ना You can Nathan. train them but you can train them till infinity. If they're sitting on this kind of money, they won't go. So there is one option is you either cut the contract and pay a penalty to them upfront. अब वो penalty हमने offer भी किया था 10 million का, but they didn't want to negotiate on that either. So they are standing their ground, basically speaking, right? Especially Sterling. तो वहां पर I don't think there is anything that can be done, right? Only thing is in the end the contract runs out. ठीक है, आप you take an L in terms of either the wages, yeah, you take a bigger penalty and let them go. Simple. ये तो रियलिटी है मॉडर्न फुटबॉल का. आई मीन ऑल क्लब्स हैव टू फेस दिस. सो आई थिंक that's But where it stands. what a fantastic Both. line, huh? This is my father is 75 years old, and for 50 years he's been a fisherman, working from 2 o'clock in the morning to 10 o'clock. This is hard life, not for players who are earning 300K per week. But it's all about mental health and all that. I get that, right? But anyway, they are not going to be part of the game. It's just that press conference just came out, so we are discussing that again. Debatable for sure, hai. Lekin luckily, just before we are going live, FA ने confirm कर दिया है that no, they are satisfied, no issues in that. कि it will continue as things are going. Let's hope for the best in January. But coming to the match in itself proper, obviously we are coming off 2 matches जहां पर हमने win नहीं निकाला है. That is Chelsea we're talking about, right? But Manchester United, in terms of form, we all know what the form is like. In terms of tactics, if I have to put you on the spot, Nathan, abhi right now, क्योंकि that has been the talk of the town, ना, कि he is very rigid, etc. Right now, क्योंकि Tactics Mason is Mount is now fit. Do you see that there might be a final thing, Nathan, that he might actually change that? कि नहीं, for sure, क्योंकि right now the sword is hanging on his neck now almost. Or you think no, not really? Listen, he's not going to change. When people keep asking me to talk about tactics, I shake my head and go, what is the point? He's already said he's not going to change. Like, what else what other kind of confirmation you want? He's been in charge almost 40 games now. He's not changed his tactic one game. People are talking about this 5 games like this is the only time he's done it. Like, we technically didn't have 4 of the starting 11 from last year, and he was doing it then. Like, and it didn't work then either. It didn't work after buying the players he wants. It's not working. And if he's going to sack himself, simple as that. He's just going to sack himself. Yeah, I mean, there's nothing else to plan say. B नहीं है Ruben See Amorim this. के पास, Let me. and it has Let me. been for quite some time. I don't give a shit about tactics. I am a fan. Yeah, I'm not in a lab coat wasting my time like a nerd. Okay, it's very simple. We win or we don't win. We can sit here, we can bring out the boards, we can put all the players there, we can move it around. It means shit. It really does. Because in reality, we could lose. It bounces off
It bounces off João Pedro's thigh and it goes rolling in, and everyone's looking at each other going, no one expected that goal. So it doesn't matter. You could win 1-0 like that. At the end of the day, we want to win the game. I don't care. I don't care. I never have cared, and I will never continue to care. We sit here going 2-man midfield, double pivot, overlapping, underlap. Bro, just win the game. Or the tactics, Great. no, you don't care. But I mean, you need to see something from the players at least. Hold the ball, stay solid in the midfield, and score a goal, bro. You can spend 3 hours doing tactics and they'll still not do it. It doesn't नहीं, matter. लेकिन Nathan, say I disagree slightly with you because You can यहाँ disagree पर with me. tactics देखो Bro, Nathan, you can let disagree me with me. भाई We बात तो have करने proof. दो मेरे No, को. hold on. People say भाई they disagree रीजन with अरे you. रीजन तो सुनो ना आप. रीजन क्या है There मेरा? is- रीजन तो सुनो there is ना. no मैं actual proof. डिसएग्री तो सुनो. लेट मी रीजन एटलीस्ट माय सेल्फ मेरे भाई. Oh. देखो आई एम जस्ट सेइंग दैट tactics, we're not saying we're not talking tactics for the sake of tactics. एक होता है कि I know a lot of tacticos there just kind of give classes without knowing shit. I'm not saying that. I'm saying कि tactics क्या है? Right now tactics is you're playing 3 in the bag, you're playing a 3-4-2-1 या 3-4-3. Is it helping your defense? Is it helping your structure? आप tactics change करोगे because that midfield is not ideal for Bruno Fernandes. Bruno Fernandes is the main guy. अगर आप उसको your main guy you're not able to get the best, absolute best out of him, what is the use of those tactics? अगर आप Kobe Mainoo को you're not able to use the way that Kobe Mainoo की ability है, that is what I'm saying. Don't you think that is basically an arguable factor? I actually don't even think those it'll come to results now. Then if you change, I honestly don't think those are tactics. You have a man who's been a central attacking midfielder. You don't play him out of position. That's not a tactic to me. That's stupidity. That is not a tactic. I'm sorry. You can sit there, double that's your pivot. jargon, You can draw the 6. tactic, na? It's not jargon though, because a man who's played his whole life as an attacker is playing. Okay, let me put it in simple words then. Forget all the numbers. A man who's been an attacker is now meant to stand in the middle of the pitch and dictate passes. That is not what he has ever done. You want to call it a 6 and 8. You want to bring out the Italian words. You want to act like we have done this our whole life. It's simple sense. I don't put a person who's been on the right hand flank or as a striker in Sunderland and then play him at right wing back where his base position's the halfway line. This has nothing to do with tactics. This is just putting people where they should be playing. You can call it a tactic, but I mean, I feel like that's common sense. It's like me telling you I'm going to put Andre Onana as striker. So are you telling me? अच्छा, are you telling me against Grimsby Town, बंदे ने डाला Mason Mount को left wing back? Wasn't that a tactic? Is he a left wing back? But is he a left wing back? Forget a tactic. Is he a left wing back? It's a simple question. नहीं, but again we're saying tactic, but he's not a left wing back. Why is he there? So that's the thing. Amorim के point of view में, obviously I'm not going to put that picture. I have that also handy. जब वो basically checkers खेल रहा था, जो भी कर रहा था. And again, I respect the manager, but what I'm saying is, according to his perspective, according to Amorim's perspective, that was a tactic that he was employing, which did not work. No tactic. Stupid. That's not a tactic. It is stupid. Exactly. That's the whole point. It's not a tactic. A tactic involves genius, not putting people in the wrong position. Just it's really stupid. I don't know how that's a tactic. I can feel Nathan what is feeling. पता नहीं मेरे पे को गुस्सा हो रहा है Nathan, लेकिन I get that. Let me just put it this way. Attackers attack, midfielders stand in the middle of the pitch, defenders defend, and the goalkeeper goalkeeps. You can say 6, you can say 8, you can say wing back, you can say catenaccio, regista. You can bring out all the words you want, but at the end of the day, they actually do simple things. To quote Maresca, the life of a footballer is not tough. Simple things. You play Mason Mount at wing back and then you go, it's a tactic to use. And I'm like, he's been doing this for the last 10 months, putting people out of position. I don't know what kind of tactic that is. If I'm a goalkeeper today, I'm not going to send Andre Onana with his goalkeeper gloves as the number 9 there. He's wearing his gloves and standing as a striker and call it a tactic. It's really stupid, isn't it? I hear you. Tanishq, I'll bring you the equation क्योंकि देखो एंजो मैरेस्का भी कहीं ना कहीं पेप वाला लैंग्वेज ही बात करता है. मतलब he kind of is very diplomatic in press conferences. Although आजकल I'm very happy with the kind of things that he's put. But if you have to compare the tactical flexibility, I've used the word tactic with you मेरे भाई, because I generally believe that there is more to it. क्योंकि आप देखो तो एक complaint. In fact, I went on rants by last year. I remember clearly that Enzo Maresca was way too rigid at times, and I felt कि भाई क्यों नहीं change करना. It was a breath of fresh air. I know हमारे injuries थे, लेकिन उसके बाद में we actually made certain tweaks
मतलब यूजेज ऑफ द बेंच इज वन क्वेश्चन कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा. ही इनफैक्ट ब्रॉट ऑन टैरिक जॉर्ज अगेंस्ट फुलहम एंड ही चेंज द गेम एंड द सीजन फॉर अस, राइट. और आप देखो तो इवन दिस सीजन वी हैव प्लेड द 3-4-2-1, वन द क्लब वर्ल्ड कप, थिंग्स लाइक दैट, राइट. सो यू हैव टू से दैट maybe it's time that Amorim, or a high time in fact, that Amorim kind of takes a leaf out of his opponent's page जो recently किया है. He was under pressure 4 months ago और अभी totally different कर रहा है. So आपको लगता है कि there is more to this United squad than what Amorim is bringing them to do on the pitch? There are two ways I look at this. I feel Chelsea have made it easier on themselves with the kind of players that they have as a trio in the midfield. The combination of Caicedo, Enzo, and Palmer relieves a lot of pressure in very crucial areas on the football pitch. So I feel they have done well for themselves that. Abhi hum keh rahe the Bruno Fernandes is the main man and the tactics need to be set accordingly. I feel if you just have one main man and like Nathan mentioned, he's an attacking midfielder. He's not playing there. He's playing as a deep lying playmaker and all that stuff. Yes, the tactics are wrong. The management is wrong. The way that it is being done is wrong. Like मैं तो इसलिए कह रहा था, मैं तो आर्टेटा और एमरम को कंपेयर कर रहा था. चलो उसको भूल जाते हैं. पर जब आप एमरम की जिद देखोगे, जब वो इंसिस्ट किया जा रहा है कि यार मेरे को तो इसको यहीं खिलाना है और मेरे को यही फॉर्मेशन खिलानी है और मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम के अगेंस्ट हाई लाइन खिलाना है, तो भाई मैनेजमेंट की ही गलती है. मरेस्का, देखो मरेस्का के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो प्लेयर्स वाले जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो टैलेंट है उसके पास, अभी जो फॉर्म में चल रहे हैं प्लेयर, पामर चल रहा है. अभी मैं बायर्न म्यूनिख का गेम के प्रीवियस गेम्स के उस पे मेरी लाइक माय मेमोरी इज फ्रेश, so I can talk about tactics and performances of players based on the previous game that they played. Chelsea was defensively very shaky against Bayern Munich, but they kept बिल्कुल. coming back. They kept finding the pockets. They kept making those runs. They kept trying to fight back, staying in the game. And it would have been it could have been a draw. It could have been a draw. Possibility थी वहाँ पे last नहीं, में. first half के बाद में तो I was like भाई मतलब we should have actually been drawing this game. And then हाँ. we probably lost it. Maybe I think it was more than just Nathan Burra. That's not tactic. That's more in the mind. Basically, we lost it. Basically, in the maybe fatigue था. Maybe in the mind we were gave too much respect. जो हम Manchester United का करते आ रहे हैं over the years at Old Trafford. To be fair, that's what happened. And मैनचेस्टर डर्बी में जब मैंने नोटिस करा, पहले मिनट में इनसाइड 20 सेकंड्स मैनचेस्टर सिटी ब्लिट्स्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड. हालैंड के पास जैसे ही फर्स्ट शॉट ही गॉट, ही स्मैश्ड इट, ही लाइक मैं 20 सेकंड के अंदर ही गोल मार के दिखाएगा सबको. एंड वो बच गया. वो हो सकता था, दैट कुड हैव बीन, अगर वो थोड़ी सी एफिशिएंट फिनिश होती वो भी गोल था. तो देयर इज अ बिग बिग डिफरेंस इन द मेंटालिटी. एंड उसके बाद आई थिंक जब देयर वर shades of performances from players like from Kobe Mainu. He had a little bit of a decent game. Benjamin Sesko was absent. And पता है क्या, जब मैं यूनाइटेड को फुटबॉल खेलते हुए देखता हूँ, नो ऑफेंस ऑफ कोर्स, इट्स जस्ट लाइक आई फील आई डोंट नो व्हाट आई एम वाचिंग. आई लाइक लोग आर्सेनल को बोरिंग कहते हैं. जब मैं यूनाइटेड को देखता हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है. लाइक कौन रन बनाएगा, पास कहाँ से जाएगा, कौन से चैनल्स खोलेंगे, कौन से गैप्स निकालेंगे. Is there a passing system? Are they doing direct passing, short passing, long balls, direct ball? I don't understand. So yeah, there is definitely confusion from my point of view when I'm watching United's games. And I guess when they play against big teams, it's always going to be a struggle. So that is why I feel that against Chelsea also it's going to be a little bit of a struggle for United. दोनों साइड्स पर प्रेशर. नितिन, इफ अगेन मतलब आई नो वी हैव स्पोकन अबाउट मैन मैनेजमेंट थोड़ा सा, मतलब इन टर्म्स ऑफ जस्ट द प्लेयर्स, आई नो एम्बोमो मेरे ख्याल से हैज हैड अ गुड इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ, बट द पीपल हु हैव गॉन आउट, राइट, बॉम्ब स्क्वाड बोल दो, जो भी बोल दो, गर्नाचो का वी हैव बीन डिस्कसिंग, बट व्हाट अबाउट द रैशफोर्ड वाला सीन. मतलब आई नो देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज इन इंग्लैंड और हमने डिस्कस किया इन द पास्ट एज वेल, लेकिन द वे दैट ही स्टार्टेड बार्सिलोना, नितिन, मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट, I know it's not going to happen. It wouldn't have happened. I know there were reasons. लेकिन do you feel a sense of कि मतलब that remarriage could have happened? मतलब do you have that feeling or not at all? Nathan, like there?
Yeah, I'm here. I'm thinking. मैं सोचा क्या हुआ थे तेरे भाई रैशफोर्ड Uh, आपको तारे दिखा दिया क्या बेचारा Listen, the thing about Rashford is, see, why are we talking about Rashford? Let's talk about Sancho. Would you have re-signed him after all his supposedly good performances for you are Chelsea? avoiding the question मेरे भाई I'm not. why are we I talking about assure. I Sancho when the assure. I topic is assure you, I'm Rashford not actually avoiding the question. It's actually going to help me out with the answer. please Would yeah go you? ahead Would you sign Sancho? yes for the salary that हमने जो offer No, किया no, था no, I no, no, was no, up no, no, for no. Would you sign Sancho based on his performances? Forget the money. Was it good yeah मैं enough, हाँ or बोला would you था like? yes Would you I want to already get did a about new 2-3 winger? videos and 2-3 lives and I said clearly मैंने keep channel में So जो किया था Sancho was there in my squad but as not a starter as not at the salary what he was demanding as a starter that's the thing fine. Okay. So if someone does well somewhere else, that does not mean he would fit with us. First of all. Second of all, Rashford has played 5 games. The season's long. right And all the people who got gassed, they're going to run out of it very soon. we've seen this picture पहले भी देखा है हमने Because बहुत I've बार because I've इसको seen it. But listen, a lot of right people go Amarim is fallen out with Rashford. He's actually fallen out with a bunch of managers, but that's not really the point. The common denominator has actually been Rashford. So if people want to blame United, that's fine. They want to blame Amarim, that's fine. But he's actually fallen out with a bunch of managers in his tenure at United. Um, Listen, I don't regret anything. If we are going to move on, we move on. Bro, I moved on. If I am reluctant to move on from David De Gea, he's the only person I've been reluctant to move on since he's gone. And he'll be probably the only person I'll be reluctant to move on until he retires. Everybody else, they can come, they can go. They don't, to me, they don't show they have what it takes to be in the cauldron. If you don't have what it takes to be in the cauldron, then it's better you go somewhere else and enjoy your life. We'll figure out how we have to do our thing. You figure out how you have to do your thing. Does that? या पता नहीं कनिष्क यहाँ पर सुशांत बोल रहे दैट आई रादर हैव हैड रैशफोर्ड देन garnacho आई एक्चुअली अग्री टू दैट कमेंट एज वेल ओवर द समर ठीक है नॉट दैट हमें चाहिए था बैगेज एनीवे ईदर ऑफ garnacho और रैशफोर्ड लेकिन कंसिडरिंग द एज ब्रैकेट और कंसिडरिंग द सैलरी एंड ऑल दैट हमने ऑब्वियसली टारगेट किया था garnacho को बट आपको लगता है कि देयर विल बी अ क्लियर केस ऑफ garnacho शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन नॉट दैट इट विल हेल्प और ही नोज रियली एवरम बॉल क्योंकि उसको समझ में आया नहीं. But do you think that will make a difference? And what do you think about Rashford as well? I would love to hear what you think. I'm very happy for Rashford. Sorry, you asked KV. Sorry, I'm नहीं नहीं thinking about other things. I first heard of Rashford जब since he was in the since he was in the youth team he has been touted as one of the big upcoming talents. So काफी time से Rashford has been known as like this guy's a huge talent. अभी क्या है ना like अब how do I डिफाइन दिस बिकॉज़ सी रैशफोर्ड को अगर नहीं अच्छा लग रहा एट मैन यूनाइटेड उसको कोई भी प्रॉब्लम है लाइक मेंटल व्हाटएवर इट इज मे बी इट माइट बी अ पर्सन टू पर्सन काइंड ऑफ अ थिंग मे बी जस्ट नॉट कंफर्टेबल एट मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर व्हाटएवर रीजन तो वो चला गया बार्सिलोना बोला चलो मैं बार्सिलोना जाके प्रूव करूंगा आई मीन लाइक दिस इज एन एथलीट इन हिज प्राइम स्टिल एंड And as a substitute एंड in Villa भी बुरा नहीं किया था to be honest. He did have impact, हाँ although ही a वाज few लाइक games यू नो like व्हाट Jason said. नहीं क्या होता है ना जब जब जैसे अभी सुशांत का कमेंट था अबाउट दिस आउटसाइड न्यूज़ ये आउटसाइड न्यूज़ ना हर एक इंसान को अफेक्ट करती है स्पेशली व्हेन यू आर अ प्रो एथलीट इन एनी स्पोर्ट आउटसाइड न्यूज़ इज द नंबर वन थिंग दैट इरिटेट्स द हेल आउट ऑफ यू कि यार तभी तभी ये लोग फोन वोन ले लेते हैं कभी कभी ये कहते हैं कि यार बड़े मैचेस से पहले मीडिया वाली बातें मत सुना करो तो आई थिंक अभी तो हम वेर टू फार टू डीप इनटू दिस तो आई फील कि यार रैशफोर्ड को अब यही लगता है दैट आई स्टिल हैव टू प्रूव माई सेल्फ आई एम अ वेरी गुड टैलेंट ही स्टिल प्लेस फॉर इंग्लैंड थॉमस टूशेल लाइक्स हिम ठीक है ऐसा नहीं है दैट लाइक ही विल बी आउट ऑफ द इंग्लैंड स्क्वाड सो आई फील दैट अगर उसको लगता है दैट हिज कॉलिंग इज एट सम अदर क्लब दैट्स अ डिफरेंट थिंग अब वही है ना लाइक देयर इज दिस न्यूज़ एंड दिस एयर अबाउट मैन यूनाइटेड राइट नाउ कि यार वो कोई मैनेजर आता है नहीं चलता कोई प्लेयर आता है नहीं चल रहा एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट I really don't know like behind the scenes exactly क्या चल रहा है because a person like me will never be able to find out no matter how many reports we keep getting and obviously
there was this air of Ineos was going to change things, and we're going to get a better manager. Like, there were some really good opportunities at Manchester United, but at that time उनको पता नहीं था कि उनके पास क्या है, and then they let it go. David De Gea की situation same थी. They should not have never have let him go. He should have retired at Man United. That would He have been didn't. the perfect. Eric Ten Hag had a veto. Eric Ten Hag is the only member. Eric Ten Hag is the sole reason that David De Gea is not there. The Glazers had the contract ready to go. Mm. I mean, like, we can't do anything about it anymore. We can't be upset about it anymore. It's done. It's gone. It's part of history now. Like, the only thing you can do is just try and make better with what you have. Arsenal had shit players. We used to finish 8th. उससे ज़्यादा नीचे नहीं गए. Arsene Wenger had the shittiest squad. Never went out of Champions League qualification. When he did, निकाल दिया. Because that is where, like, चलो ठीक है, अब rebuild का time आ गया, and Arsene Wenger, like, we need a different person to do it. So I feel अगर Arsenal कर सकती है, Arsenal also a big club who did not spend that much money at that time. Later on, after we moved to a new stadium, we fixed a lot of other things about us. Then we start buying big players. वो Mesut Ozil का was just one signing. Aubameyang was also a one-off. So I feel Got Nicholas Pepe. just got. Oh yeah, Nicholas Pepe. Yeah. Mistakes happen all the time, man. Mistakes happen all the No, time. I mean he was a talent. big money. Yeah, I meant like big money signing. Definitely, he was a good talent. I scored against United also once, I remember. But chala hi nahi wo. Eventually, like, देखो, like, see, football is a game that is played by the players on the pitch. At the end of the day, जैसे Nathan कहता है, tactics क्या है क्या नहीं है. Sometimes you just got to push the result. किसी तरह से रिजल्ट निकालो. मेरे को नहीं पता, मैनेजर कह रहा है, ठीक है, कह रहा है, बट इट इज अप टू द प्लेयर्स. उनकी परफॉर्मेंस पे सब कुछ डिपेंड करता है. पर अभी चलो ठीक है, ब्रूनो फर्नांडिस हम कहते रहते हैं कि प्लेस फॉर द बैच, ठीक है, खेलता है वो, लाइक, जान है उसमें, जोश है उसमें, ठीक है, मानता हूँ मैं, आई एग्री. पर बाकी कौन है मैनचेस्टर यूनाइटेड में? बार मगवायर आई थॉट फॉर्म में आ गया, अब उसको बेंच पे बिठाते रहते हैं बिकॉज इट्स अ टैक्टिकल डिसीजन टू गेट हिम ऑन लेटर ऑन इन द गेम. उसको पहले ही लिया. आई मीन, ठीक है, आपको अमाद खिलाना था. अमाद इतना अच्छा खेला था लास्ट सीजन अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, ठीक है, अमाद वाज प्लेइंग सो गुड, ही रेस्क्यूड यू. आप लोग, मैनचेस्टर यूनाइटेड साउथहैम्पटन को नहीं हरा पाती लास्ट सीजन अगर अमाद ना होता तो. इफ अमाद हैडंट स्कोर्ड दोस गोल्स लेट इन द सेकंड हाफ, तो अमाद के परफॉर्मेंस एंड इट सडनली कंप्लीटली चेंज्ड. तो आई डोंट नो मैन, ये जो whatever this pressure is showing on the players right now. And even I feel the new signings are also starting to feel it a little by little, because at the end of the day, Manchester United is going to come under heavy scrutiny, and players की performances पे, manager पे सब affect करेगा. Nathan, मतलब if you have to pick अभी new signings में who are the as in who's the one person that you would say that definitely it is work? Like Sesko, I think अभी भी he's getting through the gears. Mbeumo. Yeah. For me, yeah, for 18 months I've been wanting him. I wanted him and Frank when Bhai, shout out to Sports and Nathan. I remember Nathan those discussions, and Nathan has been vouching for Mbeumo for last 2 years. मैं एकदम clearly याद है, we've had multiple discussions, and shout out to Nathan क्योंकि he's been one of them who's been telling कि Mbeumo will be one of the fits, and I totally agree. And in fact, Matthias Cunha also had an impact. It's just that numbers पर unlucky till now, because Mbeumo got the save of the season from Donnarumma in the Manchester Derby also, one can argue. So you do have a point. So I think see that the signings are not necessarily negative. It's just not working as a whole at the moment. Acha, but do you see Amad Diallo playing this game? क्योंकि right wing में I believe he is. Diallo's injured, and Mazraoui can't play right. Right wing back. Just again, tactics and putting people in position, not the same thing. मैं पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि I think it might be a direct battle between Amad Diallo and Garnacho भाई, अगर Garnacho शुरू करता है.
I'm expecting Garnacho to start is what the statement if you hear Mariska ne bola hai, right? But apart from that, Nathan, what is the lineup? Let's get to the lineup. Lineup: Sesko, Mvermo, uh, Sesko, Mvermo, Cunha, Ahmad, Dogu, Casemiro, Bruno, Joro, Delict, Mazraoui, hopefully Lamens. See, ऐसा that लग is रहा है the like next. Nathan is naming people to go to war right now, and he knows that they're about to die. I mean, मैं listen, वही bro. He's sending them कि हाँ भाई देखो storm Nathan, करो bro, Ankit, energy, Norman energy. go if Come that go was conquer. true, no, bullshit. I'm not going to fake energy, bro. For what? For what? Because we're on YouTube. No, thank you, dude. I've learned my lesson long time ago. I'm just calling it By the भाई way, how it by energy the as a way, fan is Manchester if Chelsea. I was, You are no, a sorry, OG fan, no, no, यार. no, no, Manchester no. Chelsea obviously Reality, gets my some friend. energy. Reality supersedes everything. As an older man, uh, one thing I would say, if I was actually protecting them from kills, I would put Bruno behind the stadium outside of play. Just so we're clear. Oh boy, That's what I saw. would. Can't be as clear as that. But I know by the way नेथन का भी स्ट्रीम है. मैंने थोड़ा डिले कर दिया यहाँ पर, इसलिए नेथन का स्ट्रीम थोड़ा डिले हो गया. लेकिन बिग अप्स टू नेथन यार. नेथन This is what I'm talking about. This is not tactics. This is what I'm talking about. so it's about I plain can plain understand decision your making or frustration. dictatorship, in other words. It's That's the not a only term. dictatorship, yeah. It is stubbornness, and you know, we don't have coaching badges. I don't really care for tactics. I'll be frank. I'm very interested in it, but I'm not going to die on that hill. I'm not interested at all. The one thing I will say is no, we have been here a lot longer and we will be here a lot longer. And to pretend like we cannot see holes in our team and the way we play, it's kind of insulting. And that is why a lot of United creators are actually furious. And they'll be called negative, but they're also being honest because you're lying to us. Some people, like I asked you earlier, would you be surprised if a manager lied? Has a manager not lied to you? Maybe some of us are fed up of the lies. मतलब even back in the day, मुझे याद है the mind games that used to go on यार press conference. I agree with you there. But Kanishk, मतलब यहाँ पर do you agree with this goalkeeper thing going on? क्योंकि ये they've kind of done what Chelsea did last season. ना last season हमने sign किया था Jorgensen को. हम fans सोच रहे थे that is going to be the next big find of the new regime, and then Sanchez continued in goal. Right? वो चीज हुआ है यहाँ पर कहीं ना कहीं, और यहाँ तो ओनाना भी नहीं, it's बाइंदिर. तो इट इज क्वेश्चनेबल. और यहाँ पर श्योरली चेल्सी इज लैकिंग द फैक्ट दैट हमने एक और स्ट्राइकर को साइन नहीं किया, और अदर we let go Nicholas Jackson. As a neutral, you think there is a point why we actually let go Nicholas Jackson? कि you think that Chelsea missed a bullet वहाँ पर, or rather missed a train? We're talking about the goalkeeper situation. हाँ, मतलब यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल इस गेम में गोलकीपर इज डेफिनेटली अंडर प्रेशर. इट्स वेरी क्लियर whoever the goalkeeper is going to be. So if we had say two strikers on the pitch, we could have been far better in terms of just trying to attack that way or putting some pressure on the back line as well as the goalkeeper. Now we are all अच्छा. depending, a Cole Palmer hai, Joao Pedro hai bas. In terms of creation and shots on target, as much as I would love to say Enzo Fernandez and Partey, the real answer is Cole Palmer and Joao Pedro. That is our attack really. If you stop them, you stop Chelsea in terms of scoring goals. The reality सही है. है. हाँ, So सही बात है. it's so dependent on Joao Pedro. Looked tired almost in the last game against Bayern Munich towards the end, although he was very हाँ, good. अभी वो हर एक गेम स्टार्ट कर रहा है वो जाओ पेड्रो. टायर्ड तो होएगा ही. एंड प्लस मिड वीक गेम भी खेला है अभी, तो जाओ पेड्रो is going to not be on his full legs. But अगर if we just want to come back to that goalkeeper situation, I feel यहाँ पे थोड़ी सी बेवकूफ़ी दिखाई देती है मेरे को. I was actually not aware of this particular statement. पर अगर ऐसे ही है तो ये बेसिकली सबको मिडिल फिंगर दिखाने की तरह है मैनेजर की तरफ से कि देखो भाई ऐसा ही चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सब टिल एवरीबॉडी डजंट फॉल इन लाइन, तब तक मैं ऐसे ही करता रहूँगा. मेरे ऊपर डिसीजन मैटर करता है, मैंने लिया तो लिया. जहाँ तक चेल्सी के टैक्टिक्स का एज फार एज आई एम कंसर्न इज दे डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग. हाँ देखो डिफेंस शेकी है तो है, बट यूनाइटेड
isn't that threatening going forward. So I don't think they'll suffer the same kind of pressure Bayern के against जो उन्होंने face किया था, they won't against. So forward line जैसी है उसे वैसे ही रखो. ठीक है, João Pedro, if he's tired, try to nick the game in the first half, score at least one goal in the first half, and then sub him off and get Esteva or somebody. लेट्स सी, मतलब स्टार्टिंग लाइन में बात करेंगे. नेथन, बिफोर यू गो आई लेट यू एक्चुअली प्रेडिक्ट. क्या लगता है आपको नेथन, क्या होने वाला है इस गेम में? व्हाट्स योर हंच? Nathan is thinking. I'm assuming again. Okay. 2-1 Chelsea. 2-1 Chelsea. चलो भाई, नेथन इज जिंक्स्ड इट. लास्ट सीजन भी वही हुआ था नेथन का Bro, प्रेडिक्शन. I'll be very frank. If you don't beat us, y'all are shit. मैं तो लास्ट सीजन आई ऑलरेडी सेड इट. रिमेंबर माय सो कॉल्ड rant after the I know आपने No, एक नया I'm मैनेजर being dead बाउंस serious. If you don't beat us, y'all are shit. फेस किया And था. y'all aren't going to go anywhere near the league this season if y'all can't beat us. Seriously. It Should might be. sound dramatic, और but it's high time that we break that curse of Old Trafford भाई. मतलब it's high time. 3-1 United. कोई नहीं, मतलब लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अगेन लाइनअप्स में आई वुड लव टू एक्चुअली सी एस्टवा विलियन फीचर मोर. आई वुड लव टू सी सैंटोस स्टार्ट मिडफील्ड में, एंड ऑफ कोर्स जॉश एचम्पोंग अपना एक जो ही कुड बी अ लेनी ओवर फॉर ऑल वी नो इन द फ्यूचर, एंड ही एक्चुअली लुक वेरी ब्राइट. एंड दीज आर 2-3 चेंजेस जो चेल्सी फैन बेस वांट एक्चुअली, कंसीडरिंग कि पीपल आर लुकिंग टायर्ड, लेकिन वी डोंट हैव एन ऑप्शन फॉर जॉ पेड्रो. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट पामर इज फिट. लेकिन आई बिलीव एंजो मैरेस्का said there are possible more injuries which he's not revealed which. He has to look at them and then come back. Maybe it's manager I know just word play, लेकिन looks like it Palmer is fit but others may not. देखते हुआ those. But Nathan, bro, big up to Nathan भाई. Sports और Nathan को shout out है यहाँ पर सब लोग. I believe Kanishk will be here for a few more minutes, but I let Nathan go because I know that there's a stream. तो भाई do check out सब लोग. Sports और Nathan and KB Reacts are in the description below, tagged as always. Nathan, big up. Obviously, we are going to talk a little bit about the Arsenal game, and I'll let Kanish go as well. Lekin probably, I'll see you very soon, my bhai. Good luck to everyone who has games this week, and hopefully it'll at least be a fun game. And let's see what happens on the other side. Take care, guys, and don't forget to drop a like on the video. Thank you, bhai. Chalo, see you very soon. And यहाँ पर see you very soon बोल रहे हैं Mr. Pep Guardiola to Mikel Arteta. Of course, यहाँ पर Arsenal is hosting. Remember, big game भाई कनिष्क. I must say ये वाला game तो you will not be able to forget last season से. लेकिन कहीं ना कहीं they know each other's game. अब तो ये title challengers है for sure. There's not even a question वहाँ पर. But आपको क्या लगता है, मतलब considering जो हालैंड ने ब्रेक किया रिकॉर्ड in the UCL as well, right? कल हम बात ही कर रहे थे आपके चैनल में in terms of FPL. if एक टीम which you kind of not fear नहीं बोलूंगा, लेकिन you can expect scoring goals against you is Man City, right? तो big question is how do you stop Haaland? Saliba will he start? ये सबसे बड़ा question है. Saliba has Arteta ने बोला है Saliba is fit. Will he start or not? I am unsure. But Arteta ने बोला है that he is fit. दूसरी बात ये है कि for the past 2 years अब मेरे को नहीं लगता वो मैनचेस्टर सिटी का जो खौफ था और वो जो अनश्योरिटी थी यार, यू नो व्हाट, मैनचेस्टर सिटी पेप हमेशा निकाल लेता था आर्टेटा को. ही ऑलवेज हैड हिज नंबर टैक्टिक्स वाइज, मैन मैनेजमेंट वाइज, एंड जो फॉर्म में मैन सिटी चल रही थी, इट वाज जस्ट अमेजिंग. आई फील last couple of seasons Arteta has gotten it right against Pep Guardiola. Last season at the Emirates we had a comfortable win against them. I feel जब हम एतिहाद पे भी गए थे तो वो जो 2-2 ड्रॉ हुआ था जिसपे सब, जहाँ पे हमारा डार्क आर्ट्स FC का नाम पड़ गया था because we parked the bench and we were like कि हाँ भाई ठीक है, but we were 2-1 up in that game despite being a man down for a very long part in the game. We would have won that game as well were it not for John Stones का गोल. तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ हालैंड की बात करें, हालैंड ने पिछले साल भी एमिरेट्स पे गोल मारा था, तो मैं ये नहीं कह सकता कि हम हालैंड को कंप्लीटली रोक देंगे. बट आई फील कि गैब्रियल एंड अगर सलीबा भी खेलता है, दे आर ऑल्सो वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स. ठीक है, दे नो कि वो हालैंड को फेस करने वाले हैं, तो मेंटली वो भी प्रिपेयर है
कि हमें मालूम है ये आने वाला है, ये लफड़ा करेगा, कुछ भी करेगा. So there is going to be that personal battle between the centre backs and Erling Haaland, particularly. So I feel जो पहले मेरे को डर लगता था कि यार oh my God, Haaland best striker in the world, record breaking striker and all the other accolades जो उसके साथ आते हैं. I feel कि Gabriel and जो हमारा जो डिफेंस है ना, एक एक वो एक सांत्वना दे देता है. आपको लाइक व्हेन यू गो टू स्लीप ना, these days as an Arsenal fan, you're like only one goal conceded across all tournaments. ठीक है, एंड अगर हालैंड ने गोल मार भी दिया तो वी हैव इनफ प्लेयर्स who can terrorize the Manchester City defense. I don't think Manchester City को अपने डिफेंस पे इतना भरोसा होएगा जितना आर्सेनल फैंस को अपने डिफेंस पे है. एंड आई थिंक वहां पे गेम हारा और जीता जाएगा. टैक्टिक्स आई थिंक दोनों से काफी सिमिलर होगी. काफी साल पहले पेप ग्वार्डियोला वाज लाइक कि नहीं आर्टेटा बहुत बढ़िया है, आर्सेनल बहुत बढ़िया टीम है, ये है वो है. पिछले 2 सीजन से अब उसने अपना टैक्टिक्स चेंज कर लिया है. पहले वो आर्सेनल को बॉल दे दिया करता था, कहता आर्सेनल पोजेशन फुटबॉल खेलती है, खेलो, अटैक करो, हम काउंटर अटैक पे खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं. अब लास्ट सीजन मैंने नोटिस करा मैनचेस्टर सिटी वो होल्डिंग ऑन टू द पोजेशन एंड ट्राइंग टू अटैक आर्सेनल एज मच एज पॉसिबल, एंड फिर हम काउंटर अटैक पे खेलने लग गए. सो इन अ वे ही स्टार्टेड प्लेइंग इनटू आवर हैंड. एंड वहां पे आई थिंक ये अभी रिसेंट फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि ओवरऑल ऑब्वियसली द लास्ट 5 years 6 years अगर हम बात करें, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल. बट अगर हम लास्ट 2 सीजन्स मोस्ट रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं तो I feel that we are far more experienced. Our defense is far more experienced in very good form, and all it takes now is for the forward line to do their job. बाकी मेरे को डिफेंस से पूरा reassured. भाई यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि चेल्सी ने तो खैर 12 साल तक जीता नहीं ओल्ड ट्रैफर्ड पे, बट 2.5 साल हो गए दैट इन ऑल कॉम्पिटिशंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैन सिटी हैजंट बीटन आर्सेनल. दैट्स हाँ, क्रेजी स्टैट. That's a crazy yeah. stat, and the credit to Arteta and Arsenal for that. As much as हम कितना भी यार सोचे Arsenal hasn't won this that, and I know that it's not about beating Man City or coming second trophy जो हम opposition wise बोलते हैं, but it is this Man City despite that recent say 10 months का transition, 2.5 साल तक you have not lost to Man City. That's a big deal, and in fact आपने dominant wins लिए जैसे आप देख रहे हो. But stay humble derby तो है, 100% stay humble derby है. डेफिनेटली यहाँ पर टेम्पर्स विल फ्लेयर 100%. किसने इसलिए मैं गलती बोल रहा कर हूँ दी है? ये हालैंड ने गलती कर दी थी पिछले गलती कर साल, दी है, राइट. ये बोल के इसने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी जाकर. ये जो इसका ये ब्रावाडो वाला मोमेंट था, आई थिंक हीट ऑफ द मोमेंट में बोला होगा इसने. एंड मैच के तुरंत बाद तो एड्रेनलिन रश तो होता ही है. आई थिंक उसमें उसने बोल दिया होगा, एंड इट रियली केम बैक टू बाइट देम. नहीं नहीं, एब्सोल्युटली बोलना पड़ेगा. बट यू नो व्हाट, क्रेडिट वेयर इज ड्यू भाई. मतलब वेयर इट इज डिफेंस इज वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन लेट्स होप एंड प्रे. अच्छा, लेकिन क्रिएटिविटी में ऑन द अदर हैंड इफ यू थिंक अबाउट इट, यस यू हैव जस्ट कंसीडर्ड एक गोल एज ऑफ नाउ दिस सीजन, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स आर यू स्लाइटली डिसअपॉइंटेड कि यू आर एक्सपेक्टिंग थोड़ा बहुत बेटर कंसिडरिंग जो आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है. मतलब अब तो मतलब यू आर इन द पार्टी भाई का, वेलकम टू द क्लब. जस्ट लाइक बिलियन पॉइंट बॉटल जब हमें बोलता है, आप लोगों को भी बोला जाएगा अगर आप जीतो नहीं इस सीजन में. बट मैं आपको लगता है तो क्रिएटिविटी में थोड़ा सा, मतलब नॉट नंबर ऑफ गोल्स, आई एम जस्ट सेइंग मैं क्रिएटिविटी देखो, एलिमेंट. जिस पोजीशंस पे हमने प्लेयर्स साइन करे हैं नए, वो हैं अटैकिंग, सारे के सारे ऑलमोस्ट अटैकिंग मिडफील्ड में. नॉरगार्ड साइन करा है, वो यूजुअली बेंच से आता है, बट एजे मैडुवेके, विक्टर जोकेरेस, ये सब अटैकिंग प्लेयर्स हैं. तो जब आप नए प्लेयर्स को इस सिस्टम में लाते हो, जुबिमेंडी, ठीक है, जुबिमेंडी को, हाँ ठीक है वो है सीडीएम है, बट वो एक प्ले मेकर की तरह यूज किया जाता है. जब भी आप ऐसे पोजीशंस में नए प्लेयर्स को लाते हो, कंसिस्टेंटली खिलाते हो उनको उनको थोड़ा सा एक दूसरे का गेम समझने में टाइम लगता है. वो केमिस्ट्री, वो जेल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है एज प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, नो मैटर हाउ गुड दे आर. तो आई फील we all can agree on the fact that Eze is a fantastic signing. Victor Gyökeres is a great striker, and even Madueke, in fact, out of all the new signings, has looked the sharpest and mentally very strong. And I feel that he feels कि क्योंकि इतना ज़्यादा backlash हुआ था जब Arsenal signed Noni Madueke, I feel that he personally thinks once again as a professional sportsman, भाई I have a point to prove. He's still very young, and he अभी उसने इंग्लैंड के लिए भी गोल मारा था एंडोरा के अगेंस्ट जब मैच था उनका. तो आई थिंक ही इज
पॉजिटिवली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज फुटबॉलिंग करियर, एंड जो परफॉर्मेंसेस मैंने देखी है बहुत अच्छी हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर ये अगर आर्टेटा थोड़ा सा अगर पोजीशन रोटेट करता है, जैसे हमें पता है ओडेगार्ड इंजर्ड है अभी, तो हो सकता है एजे को सेंट्रली लाया जा सकता है। एंड वी नो दैट एजे इज नॉट शाय, इवन जब वो क्रिस्टल पैलेस के लिए खेलता है या खेलता था लिवरपूल के अगेंस्ट, जब वो क्रिस्टल पैलेस के लिए खेलता था, तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी उसके पास इन द सेंटर लाइन ऑफ द पिच। वो जो फॉल्स नाइन जोन 17 वाली जो पोजीशन होती है, वहाँ पे काफ़ी फ्रीडम थी उसके पास टू मूव एंड टू ब्रेक लो ब्लॉक्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो आई फील अगर एजे को सेंट्रली ला सकते हैं, मार्टिनेली को लेफ्ट में खिला सकते हैं, ट्रोसार्ड इज ऑल्सो अ ग्रेट सब्स्टिट्यूशन। तो दीज आर गुड प्रॉब्लम्स टू हैव। हम कहते हैं ना यार, किसको सेलेक्ट करेंगे, किसको स्टार्ट करें, किसको बेंच करें। तो जैसे You ट्रोसार्ड एंड needed that मार्टिनेली, all those years हम यही बोल रहे थे ना कि बैकअप आर्सेनल का डू दे हैव दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड दैट्स नाउ फाइनली। मैं सिर्फ देखता हूँ जो आपके साथ भी मैंने डिस्कस किया है, लेकिन जस्ट टू काइंड ऑफ टच अपॉन दैट, क्योंकि आपने बोला है, मुझे लगता है एजे इज अ ब्यूटीफुल क्रिएटर, कहीं ना ग्लाइड्स थ्रू, समटाइम्स यू नीड दैट थिंग, लेकिन वो चाहिए फॉर समवन हु कैन कम इनवर्ड रादर देन आउटवर्ड। ठीक है, आपको चाहिए फॉर आउटवर्ड अगेन। अगर आपका होता से फुल बैक समवन लाइक नूनो मेंडिस, जस्ट रैंडमली मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ही इज द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ ऑन फॉर्म, राइट? तो नूनो मेंडिस टाइप होता, देन आई कैन अंडरस्टैंड एज ए काइंड ऑफ प्लेइंग, बिकॉज वो इनवर्ड काइंड ऑफ ग्लाइड ज्यादा नेचुरली करता है, पुट इट दैट वे। Whereas right now what I see, both Calafiori and Luis Kelly are better off kind of inverting rather than going outside. Not that they're bad, but I'm just saying they're wonderfully better अगर वो inside आते हैं। तो वहां पर I think it's fairly understandable अगर आप देखते हो से Madueke trying to make the pitch wide, or maybe Martinelli, one of them two, or Eze slash Trossard kind of play in that number 10 role up until Odegaard is fit, राइट? और इवेंचुअली मेरे ख्याल से वही होने वाला है। अब वही है, आई डोंट थिंक ट्रोसार्ड के लिए यू प्रोबब्ली गॉट द काइंड ऑफ बायर्स दैट यू वांटेड, बट नाउ इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि आपका हैवर्ट्स नाउ इज नॉट 100% फिट, राइट? एंड देन ऑब्वियसली गैब्रियल जेसुस का पीपल डोंट टॉक। मतलब am I being harsh in saying that he's one of the biggest flops in EPL in recent years? Sterling and Gabriel Jesus is right up there मेरे ख्याल से। आई फील नो, बिकॉज लास्ट सीजन जब वो फिट था, ही वॉज परफॉर्मिंग, ही वॉज स्कोरिंग। पीएसवी के अगेंस्ट उसने 2 गोल मारे थे इन द चैंपियंस लीग। और भी गेम्स थे वेयर अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड उसने स्कोर किया था। तो जब वो ठीक होता है, यू कैन एक्सपेक्टेशंस रहती हैं उससे, एंड आई डोंट फील जैसे स्टर्लिंग को, अगर इवन इफ यू शश द आउटसाइड नॉइज अबाउट स्टर्लिंग, आई फील गैब्रियल जीसस इज मोर एफिशिएंट देन रहीम स्टर्लिंग। आई फील उसकी फिनिशिंग बेटर है। आई फील उसकी लाइक हिज टेक्निक ऑन द बॉल इज बेटर टिल नाउ। मतलब स्टर्लिंग हैज बीन अ ग्रेट प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट। हम तब की बात नहीं मैं कर रहा, मैं अब की बात कर रहा हूँ जब गैब्रियल जीसस हैज कैरिड ऑन विद हिज फॉर्म। पर वही है उसका, लाइक जो नी इंजरी है, इट इज़ अ सीरियस इंजरी, एंड आई डोंट थिंक कि at this point Gabriel Jesus is no longer a viable option आर्सेनल के लिए, क्योंकि वो इंजरी प्रोन है, एंड वो जो इंजरी है उसको लाइक रेगुलरली होती रही है। तो दैट जस्ट मीन्स वन थिंग एट दिस पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ क्विकली, स्टुअर्ट एटवेल विल रेफरी इन आर्सेनल फिक्सचर। एनीवन इन द चैट कैन टेल मी भाई कौन सा मैच लास्ट ये किया था? कनिष्क probably knows it, but let's see if the chat can tell. Chat, स्टुअर्ट एटवेल लास्ट रेफरी कौन सा मैच किया था of Arsenal? Anyone in the chat can tell me, and it was very very controversial, very very controversial, और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ऑफ कोर्स आर्सेनल चेल्सी फैंस नो सर्टेन रेफरीज यू ऑलवेज डोंट वांट इट और नॉट, बट आई थिंक ये वाला आई थिंक कंट्रोवर्शियल तो 100% है मेरे भाई। कनिष्क, यू हैव एन आइडिया? I am trying to think very hard. Atwell last 2 years. It was that crazy न्यूकासल गेम भाई, न्यूकासल Oh गेम my आपको याद है? God. मतलब दैट वेंट टू द एफए, एंड ऑडियो क्लिप्स इससे ही शुरू हुए थे जहां तक मुझे याद है। द ऑडियो क्लिप्स Oh स्टार्टेड my कमिंग एंड ऑल, God. राइट? दिस वाज अलोंग विद लिवरपूल स्पर्स, और ये वाला, ये दोनों बहुत कंट्रोवर्शियल मैचेस थे ना 2023-24 सीजन में। दिस वाज इट, Oh my God. द लिवरपूल स्पर्स गेम क्या एंड याद द दिला आर्सेनल दिया। न्यूकासल गेम। हाँ, हाँ, तो दिस वाज द वन। So that is going to be it. But jokes apart,
क्या लगता है in terms of battles, where will the game be won and lost of a Man City? आपको क्या लगता है biggest threat Haaland है, लेकिन Personal battles will be going on between Haaland and the centre backs. That is without a doubt. My concern is Jeremy Doku on the screen right now. My concern is Rodri. I don't know about his recent form, but previously he has played well against Arsenal. Savinho, I don't think last game खेला था क्या Savinho? I don't think so. I don't think Yeah, Savinho last game I खेला था. doubt if Savinho will be there. I think for big games But उसको अच्छा लगता है कि ना बर्नार्डो सिल्वा की यूज करे इन फ्री रोल. बर्नार्डो सिल्वा आई फील अब उस वाले लेवल पे नहीं है जिस पे वो हुआ करता था. तो आई फील कि उससे इतना ज़्यादा थ्रेट नहीं है, बट डेफिनेटली जेरेमी डोकू. अगर अगर देखो जैसे सेंटर बैक्स के बीच में अगर हालैंड घुस जाता है ना किसी तरह, व्हेन जेरेमी डोकू इज ऑन द बाय लाइन, तो देयर इज अ बिग कंसर्न कि देयर इज अ बिग कंसर्न दैट ऑल दैट हालैंड रिक्वायर्स इज जस्ट अ टैप इन. ठीक है, तो ही विल बी इन दैट मेंटल स्पेस. सेंटर बैक्स हैव टू बी रेडी. एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली यश ने अभी बोला कि यस दिस गाय, ये पीएसजी के अगेंस्ट जब हम खेले थे लास्ट टाइम, मैं विवेक भाई के साथ स्ट्रीम पे था, वरुण वाज आल्सो देयर, एंड आई वाज जस्ट लाइक कि यार स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में द काइंड ऑफ सेव्स दैट ही मेड फॉर पीएसजी वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. मैं आज ही कोई आर्टिकल पढ़ रहा था कि इसको क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया और ये सब वगैरह, क्योंकि उसकी डिमांड्स आई थी. आई थिंक इट मेक्स सेंस कि इसकी डिमांड्स हाई होनी चाहिए थी, बिकॉज द सेव्स दैट ही मेड, ओडेगार्ड का सेव, मार्टिनेली का सेव, साका के से सेव, सो दोज आर थ्री क्लियर कट. अगर कोई और गेम होता दैट वुड हैव बीन डन एंड डस्टेड राइट देन एंड देयर. पर Donnarumma is going to be tough to crack. I feel this is not going to be a high scoring game at all. I would not be surprised with a 1-1 draw. I will not be surprised with a 1-0 Arsenal win. वाओ. मतलब ग्योकरेश का क्या आपका ये रेटिंग है अभी बाय द वे टिल नाउ? Joker is not super impressed. मैं आप completely honest बोलूँगा. I think he is slow, which was not the case जब वो स्पोर्टिंग में था. आई एम नॉट कंसर्न विद हिज फिनिशिंग. फिनिशिंग ठीक है उसका, जब उसको बॉल मिलती है राइट एरिया में वो कर लेता है अपना काम. लीड्स के अगेंस्ट उसने ठीक ठाक ड्रिबल करके लेफ्ट हैंड साइड से कट इन करके गोल मार दिया, बट दैट इज लीड्स, तो वी कैन नॉट रियली बेंच मार्क दैट गोल और बुक मार्क दैट गोल एज अ रेफरेंस कि भाई ऐसे खेलता है ये. मैनचेस्टर सिटीज, लिवरपूल के अगेंस्ट गोस्टेड, यूनाइटेड के अगेंस्ट गोस्टेड, तो आई विल हैव टू पॉइंट दैट आउट. तो आई एम होपिंग, उसने खुद वैसे योकेरेस ने एडमिट करा है कि यार मेरा माय फिटनेस इज नॉट एट द लेवल. बट देखो भाई, सीजन गेम वीक 5 में आ गए, अभी अभी फिटनेस नहीं रहेगा तो कब रहेगा? यू हैव टू गेट वर्किंग ऑन इट. तो आई फील आर्सेनल मैनेजमेंट एंड योकेरेस हिमसेल्फ नीड्स टू immediately step it up. And Manchester City in most recent years is one of the biggest games on the calendar for me personally. क्योंकि अगर आप 4 times बैक टू बैक प्रीमियर लीग चैंपियंस को हरा देते हो, then you have a real shout. ठीक है, दैट इज अ स्टेटमेंट विन. जब भी हम टॉप टीम्स के साथ खेलते हैं, जब हम चेल्सी के अगेंस्ट खेलते हैं, जब हम लिवरपूल के अगेंस्ट खेलते हैं, जब सिटी के अगेंस्ट खेलते हैं, जो भी परफॉर्मेंसेस होती हैं स्टेटमेंट विक्ट्री होती है. आई वुड नॉट वांट टू सी मैक्स डाउमन इन दिस गेम. हो सकता है आए, बहुत ही बढ़िया मे बी प्लेयर ऑन है. द बेंच, क्योंकि कंसीडरिंग दैट मतलब ओडेगार्ड इज नॉट देयर ऑफ द बेंच, पॉसिबिलिटीज तो है. आई डोंट आ नो. सकता है. देखो फ्रेंडलीज में भी जब अपन खेले थे तो आर्टेटा इसको ले आया था न्यूकासल के अगेंस्ट, एंड मेरी फट गई थी. मैंने बोला यार ये क्या कर रहा है बेचारे बच्चे को, अगेंस्ट दीस थग्स यू पुट हिम. एंड इवन दो इट वाज अ That's फ्रेंडली, the न्यूकासल criticism नेवर of प्ले. Pep पे ना. Pep का भी वही criticism है over the years ना, that he's not really used a Man City academy in the golden era as much as what he could have. Although उसने फोरपीट करे जीता तो क्या ही तो यूज करता है. एंड आर्टेटा का वो डिबेट नहीं हो सकता पॉइंट, क्योंकि he has probably not that stat right to give. So I think he could be a good impact, but again not in this game. Probably you're right. अच्छा, एक चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ आज before you go is the fact that आज जो CEO चेंज हुआ है, is that something? What मेरे is को अभी I don't have the inside information. Obviously, there नहीं are नहीं नहीं things नहीं which नहीं, happen. ये Kroenke के साथ. कोई आई एम फॉरगेटिंग वो डेजिग्नेशन क्या होती है. ही हैज लेफ्ट एंड द टेक्निकल डायरेक्टर हैज नाउ बिकम द सीईओ. तो आपकी स्ट्रीम पे आने से पहले ही मेरे को ये न्यूज़ मिली थी, एंड आई वाज लाइक अच्छा, आई जस्ट ग्रेस थ्रू इट. बट अच्छा, आर्सेनल कंफर्म मैनेजिंग डायरेक्टर रिचर्ड गार्लिक विल बिकम द न्यू सीईओ विद इमीडिएट इफेक्ट. आई एक्चुअली डोंट नो मच अबाउट दिस. आई ऑल आई नो इज कि
इससे पहले जो था, he had a good relationship with the Kroenke sports group, but this is very very sudden, very quick. I did not have time to read a lot about this. मतलब it's Uh, off pitch. I think it's an ongoing thing which is probably settled now, so it's not a big deal मेरे ख्याल से. लेकिन वही है, it's not a case. वही मैं बोलना चाहूँगा, यही चीज़ अगर चेल्सी का तो लोग बोलते हैं कि यार everything is kind of volatile before the big game. But let's see what happens. भाई I know कि कनिष्क को जाना है नेथन के स्ट्रीम में. Before you go, what's your prediction इस गेम का as well as the Merseyside Derby, which is also going to be big in my opinion. Merseyside Derby, I will give it a 1-1. I Wow. feel Arsenal Man City, I will go with 1-0 Arsenal. And Chelsea versus United, I'll go 3-0 Chelsea. And मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ 3-0. कि आप बैठे हो यहाँ पे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि that's just my gut feeling. Oh I'm भाई actually साहब, gut feeling. क्या नेथन भी बोली यहाँ होता, जनता भाई, मैं चैट आप लोग कहता, भी बोलो. मैं आपको कहने वाला था यार, नेथन, अभी मैं जाके नेथन से बात करूंगा, बोलूंगा यार देख, मेरे को तो यही लग रहा है यार, देख मैं क्या बोलूंगा, अभी तेरे से झूठ नहीं बोलूंगा. दैट इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन. ओके, बिग अप द चैट यार. मैं देख रहा हूँ चैट में कमेंट्स कम आ रहे हैं, तभी आ रहा है क्योंकि सब्सक्राइब ऑल वाला स्ट्रीम किया. गाइस, ब्रेकिंग न्यूज, ऑलमाइटी ब्लूज एफसी इज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. वो टैगलाइन मैंने नाम के लिए नहीं दिया मेरे भाई, उसका मतलब क्या है? फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. आप चाहे आर्सेनल फैन हो, चाहे आप बार्सिलोना फैन हो, चाहे आप रियल मैड्रिड फैन हो, चाहे आप पीएसजी के फैन हो, चाहे आप चेल्सी के फैन हो, चाहे आप बेसिकली यूनाइटेड के फैन हो, सिटी के फैन हो, आपको 100% गारंटी मिलेगा कंटेंट ईच एंड एवरी क्लब का इस चैनल पर. अगर हमने 1600 वीडियोस किए, उसमें से 1000 वीडियो से ज्यादा है बाकी क्लब्स के दैन माय ओन क्लब. बट दैट्स वेयर बेसिकली मच रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी. हिट दैट लाइक बटन, नॉट जस्ट एन ऑलमाइटी ब्लूज स्ट्रीम जो हम कंटिन्यू करने वाले फ्यू मिनट्स, बट लेट्स गिव सम लव टू अपने भाई कनिष्क एज वेल एज नेथन. दोनों के चैनल्स लिंक्ड है बिलो. नेथन स्ट्रीम भी कर रहा है, सो यू कैन चेक हिम आउट एज वेल. कनिष्क, लवली टू हैव यू. So we will be थैंक यू meeting सो very मच. soon, but all the इट्स best for the एक्चुअली, game पता है as well. क्या, I've been watching you making contact for such a long time, and कभी कभी मेरे को काफी एक surreal सी feeling आती है. I'm actually sitting here talking to you, discussing Nothing football, and it's surreal, bro. actually a very, Still about it's a 20 people real. remember us and come to our streams. That's a big deal after 4.5 years and kind of talking so much. लेकिन क्या हो जाता है ना, लोग बहुत जज करते हैं 30 सेकंड के रील में. तो despite working so hard and always been there for the content, no, we've been judged. So that's what the world is all about. But I respect that you It see is, that, yes. and love you for saying that, bro. But again, we'll meet soon hopefully. ठीक है? Thank you so much, Ankit bhai. चलो भाई, बेगा बेगा. और भाई चैट आप लोग बोलो, बाकी क्या हाल चाल है? प्रतीक इन द हाउस बोल रहे 1-1 ड्रॉ टू चेल्सी यूनाइटेड. फेयर इनफ. यू नो व्हाट, मुझे भी गंदी वाली फीलिंग आ रही है दैट येट अगेन वी माइट प्ले द सेफ रूट. अब लेट्स सी व्हाट रियली हैपेंस. इट्स एनीवन्स कॉल. आई डोंट नो भाई, मतलब इट्स डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ कम टू कंक्लूजन्स. जैसे चेल्सी खेलती है इन बिग गेम्स, लेकिन वी हैव सर्टेन बिग प्लेयर्स फॉर देयर. अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ प्रतीक, यश, सुशांत, फ्राइडे इवनिंग है भाई, फ्राइडे फंडे, वेयर आर द ऑलमाइटियंस भाई? ये वाला क्वेश्चन मेरे टैगलाइन में चेंज कर देना चाहिए. इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी नहीं करके मैंने कर देना चाहिए, वेयर आर द ऑलमाइटियंस? ऑलमाइटी ब्लूज एफसी गाइस, दैट्स द सेम चैनल पीपल कॉल्ड ओजीज, पीपल कॉल्ड मी ओजी. जो मैं बोलता था हम्बल होकर, भाई मैं ओजी नहीं हूँ, जस्ट अ फैन हूँ, जस्ट लाइक यू एंड मी. अब सच में वैसे बना दिया आप लोग ने, अच्छी बात है, बिकॉज एवरीवन काइंड ऑफ गेट्स टू गेट द रियलिटी चेक. आई नो कंटेंट देखकर एक ही बंदे का आप बोर हो जाते हो आफ्टर 4.5 साल. आई टोटली गेट दैट, बट आई ट्राई टू ऑलवेज bring new panel members for you all. At the end of the day, community is more than welcome. If there is mutual respect, I'll respect each and every one. Or it's a fan channel for all to see. We try and do lots of content, not just live streams, previews, reviews, reactions, watch alongs, but also kabhi kabar quizzes series jo hue the, we are going to get back if people are interested. A lot of banter sessions also go on, videos, history videos as well included there. आप check कर सकते हो. मैं अभी record ही किया just before the stream started with another panel जो हम डालने वाले वीडियो कल. So I would love to know, why is it that we have to still, after 4.5 years of giving 1500 videos and improving the camera quality, improving the I have upgraded my internet, I've upgraded my camera quality, I've upgraded the camera, I've upgraded the mic, each and everything. Thumbnails आपके feedback के मुताबिक जो आप दिया करते थे, I've upgraded. Where are the almighty? My question remains the same. तो अगर आप some
बिग शॉट टेल्स यू दैट सपोर्ट ऑलमाइटी ब्लूज ओनली, देन यू विल सपोर्ट. आपके पास इतना नहीं है कि आप लोग देख पाओ कि भाई बंदा पैशनेट है, बंदा नॉलेजेबल है, बंदा भाई मस्ती चाहता है, बट ही रिक्वायर्स सम सपोर्ट. So we can do a little bit more support, but big ups to the 17 people who are still watching us after 1 hour 17 minutes of stream. But कोई नहीं, जो लोग नए हैं, brilliant to see you all. But people who are not subscribing, I would love to know why. I have kind of sold enough. आप लोग चेक कर सकते हो अपने videos on my home page along different playlists है. तो अगर आपको अच्छा नहीं लगे फीडबैक देना, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपको अच्छा लगेगा और आप सब्सक्राइब करोगे. बट एनीवे, let's actually go through a little bit more in terms of और क्या मैचेस है. एनी अदर मैचेस जो आप लोग देख रहे हो फुटबॉल से, हम क्या हाल है? मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बाकी मैचेस में कौन सा आपको लगता है, मतलब मैंने पोल तो डाला ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द मैचेस जो ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं, 3 मेजर मैचेस, मर्सीसाइड डर्बी का अगर हम ब्रेक डाउन करें, आपको क्या लगता है, मतलब कंसिडरिंग दैट एक और 5वीं बार लिवरपूल ने, जो कल हम डिस्कस ही किया था गोटेड पैनल और चैट के साथ, क्या लिवरपूल विल गेट अ विक्ट्री अगेन इन द लास्ट मिनट्स? लास्ट ईयर 1-0 था, याद रखिए. वहां पर इफ आई रिमेंबर राइट, किसने स्कोर किया था एक गोल? ओ, द लेट डियोगो जोटा. द लास्ट गोल, द विनर scored in the Merseyside derby was Diego Jota. That statement is enough for you to say कि भाई there is a lot at stake वहां पर for Liverpool, not just Everton. But Everton have looked good. Of course, Grealish, KDH, MDH मसाला अपना नहीं क्या? So that is also one to watch for sure. Sunderland Villa, interesting. David Moyes का record अच्छा नहीं है at Anfield, I believe. He would like to change it. Let's see that I'm putting on the screen. Yash, मेरे भाई, thanks मेरे भाई, thanks a lot. It's glad that some people are still remembering taking names, but although बातों में ही रह गया हो भाई, नंबर्स में नहीं रहे हम एनी मोर, एंड दैट्स द रियलिटी. पीपल कॉल अस डेड चैनल, ये चैनल, वो चैनल. आई वुड लव टू नो पीपल एट माय एज कम एंड बेसिकली डू व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू फ्रॉम 4.5 years नॉन स्टॉप विदाउट मच सपोर्ट रिसेंटली द लास्ट ईयर एंड 2. बट कोई नहीं, टेंशन नहीं है. कुछ लोग जो सपोर्ट करते हैं वही सराखों पर यार, especially the members, the loyal subscribers, as well as basically the new subscribers and the panel who make themselves available and call us back as well, because that's a collaboration after all. Like, yeah, Villa haven't scored. Yeah, that's Villa under proper pressure hai bhai Rajiv. I would like to agree with that. Villa have under proper pressure. मैं तो बोलूंगा फुलहम ब्रेंटफोर्ड हमें बहुत सताई थी लास्ट वीक, फॉर पीपल टू रिमेंबर, राइट? So that is another one to watch out for. Wolves, I think, should get the better of Leeds, is what I'm assuming. West Ham, Crystal Palace भी derby है, technically speaking. वो भी एक derby है. Fulham, Brentford भी derby है. Wow, this is a crazy week, भाई. Crazy week है. अच्छा, Burnley against Forest. Don't sleep on that one. याद रखिए, Ange already under pressure है. Already under pressure है. यही बोले. प्रतीक, क्या हाल है? वी हैव डिस्कस्ड चेल्सी मैनचेस्टर. मेरा लाइनअप एक वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है, सो वहां पर आपको मिलेगा. मैंने करीबन 75% मेरे थॉट्स शेयर किए चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑलरेडी, और मैनचेस्टर चेल्सी का ऑलरेडी स्ट्रीम में पहले 40 मिनट में आप चेक कर सकते हो, पीपल हु जॉइन लेट. बाकी आपको मिलेगा डेफिनेटली इन द मॉर्निंग वीडियो, ठीक है? लेकिन बिग अप टू ईच एंड एवरीवन भाई, अगेन शॉट आउट टू ईच एंड एवरीवन. बोलेगा कितने लाइक्स हुए, लेट मी नो व्हाई द लाइक्स आर नॉट इंक्रीजिंग, लेट मी नो व्हाई YouTube is not recommending a channel. क्यों? क्योंकि आप लोग बेल आइकन दबाते नहीं हो. क्यों नहीं दबाते हो? I would love to know. I'm available on Almighty Blues FC on Twitter and Instagram. They can big up the panel, big up the chat. Always here, no matter what. आप लोग बोलो what you want to see on channel. We would love to do that because this is my full time job and I would love to get a little bit more प्यार और support so that कहीं ना कहीं मैं demotivate नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ as much as I'm a creator and a fan just like you and many others. But कोई नहीं, big ups to you, Yash, Rajiv, Pratik, football Siam in the house, the panel of course, यहाँ पर Sushant, City Hub and all the others. Suraj, of course, always here no matter what. We will see you very soon as well. Bye guys.